Good morning, friends. In previous lecture, we studied the unit operation of the agricultural processing. Today, we discuss about the air screen cleaner. Air screen cleaner, it is the device which are used for the cleaning the grain material. That means that it removes the foreign material which are present in the grain material. It consists of the screens. The screens are used in the combination with the air blast performs the satisfactory cleaning and separation operation for the most of the granular material. The air screen cleaner uses the three cleaning system. First one is a blowing and aspiration, scalping screen, and third one is a grading lower screens. The air screen cleaner can be classified in the two distinct types, vibratory air screen cleaner and the rotary air screen cleaner. Vibratory air screen cleaner, this screening unit is composed of the double or the multiple up to 8 number of the screens. These screens are tightened together and suspended by the hanger. So these screens have the horizontal oscillating motion and the slightly vertical motion. These two motions in combination move the grain down the screen and at the same time toss sufficiently above the screen so that bed of the grain is properly stirred. The slope of the screen is adjustable to control the rate of the downward travel of the grain. The screens are available in various shapes, that is the round, triangular or the slotted holes. Sometimes the holes of the screen are clogged when the fine degree of the sorting is made by the machine. To avoid this clogging, the screens are generally fitted with the brush which moves under the screen and pushes the clogged material back through the skin. जो ये वाइब्रेटरी एयर स्क्रीन क्लीनर है उसमें जो स्क्रीनिंग यूनिट है वहाँ उस स्क्रीनिंग यूनिट में डबल अप टू 8 नंबर ऑफ स्क्रीन्स अटैच किए जाते हैं और वो सभी स्क्रीन्स टाइट एक साथ टाइट किए जाते हैं और हैंगर को सस्पेंड किए जाते हैं. हैंगर को सस्पेंड किए जाने के वजह से वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटिंग मोशन एंड स्लाइटली वर्टिकल मोशन क्रिएट होता है. एंड इस टू मोशन की वजह से और दोनों मोशन की वजह से वहाँ पे स्क्रीन पे जो भी ग्रेन है उसकी मूवमेंट होती है. अब स्क्रीनिंग यूनिट में जो भी स्क्रीन यूज़ किए जाते हैं वो स्क्रीन्स डिफरेंट शेप के होते हैं, अवेलेबल होते हैं, राउंड, ट्रायंगुलर और स्लॉटेड होल्स. Then these holes of the screens are clogged. So to avoid this clogging, जब स्क्रीन पे सब ग्रेन मटेरियल की क्लॉगिंग होती है तो वो क्लॉगिंग अवॉइड करने के लिए उस स्क्रीन को एक ब्रश से फिट किया जाता है और उस ब्रश से फिट करने की वजह से स्क्रीन पे जो भी मटेरियल आता है वो ब्रश की मदद से मूव किया जाता है और जो क्लॉग मटेरियल है वो स्क्रीन पे भेजा जाता है. दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाइब्रेटरी एयर स्क्रीन क्लीनर. This is a diagram of the vibratory air screen cleaner. We can see that the components of the vibratory air screen cleaner: feed hopper, buffle plate, upper screen, blower, sand filter, discharge channel, discharge funnel, sentry clone, ascending separator and the dust bag. There are the two screens in the machine. That screens are fitted with the aspirator to suck the lighter materials. The gain passes from the feed hopper over the buffle plates to the upper screen. Light particles are sucked away by the aspirator during the operation. The coarse impurities such as stone straw particles are screened off by the upper screen and discharged out through an outlet. The grains fall through the lower screen where the sand dust particles are screened off. The grains leave the machine through the discharge funnel. While passing through the funnel, the grains again cleaned by the upward draft of the air in the ascending separator. During this process, the remaining light impurities are sucked away and all our impurities are collected in the dust bag which are attached for the collection of the impurities. This is the working principle of the vibratory air screen cleaner. if vibratory air screen cleaner में इस मशीन में दो स्क्रीन दिखाई गए हैं हमें.
एक है जो अपर स्क्रीन है और दूसरी है वो तो लोअर स्क्रीन है। जब भी मटेरियल वो फीड हॉपर से अपर स्क्रीन पे आता है तो अपर स्क्रीन में जो कोर्स इम्प्योरिटीज़ है, स्टोन, स्ट्रॉ, ये रिमूव किया जाता है और वो डिस्चार्ज चैनल के थ्रू आउट बाहर निकाला जाता है। उसके बाद जो ग्रेन है वो अपर स्क्रीन से लोअर स्क्रीन पे आता है। जब वो लोअर स्क्रीन पे आता है तो उसमें से सैंड एंड डस्ट पार्टिकल रिमूव किए जाते हैं और ग्रेन जो है, क्लीन ग्रेन, वो डिस्चार्ज फनेल थ्रू बाहर निकाला जाता है। जब डिस्चार्ज फनेल थ्रू ग्रेन्स बाहर निकाला जाता है तो उसमें अगेन क्लीन किया जाता है बाय यूजिंग द असेंडिंग सेपरेटर। असेंडिंग सेपरेटर का यूज़ करके फिर से क्लीनिंग किया जाता है और जो लाइट इम्प्योरिटीज़ है वो सब लाइट इम्प्योरिटीज़ साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ करके बाहर निकाले जाते हैं और सब इम्प्योरिटीज़ वो डस्ट बैग में कलेक्ट किए जाते हैं। डस्ट बैग आर अटैच फॉर द कलेक्शन ऑफ द इम्प्योरिटीज़, उसके लिए डस्ट बैग अटैच किया जाता है। दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वाइब्रेटरी एयर स्क्रीन क्लीनर। Then next is a rotary air screen cleaner. The rotary air screen cleaner, this screening unit has a circular disc. There is a motion, is a circular in the horizontal plane. These have either single drum or the double drum. It consists of the rotary screen, aspirator, hopper and the electric motor. Single drum rotary air screen cleaner, this is the diagram. Here is the single drum, means this unit is consist of the only one drum. If any screen cleaner having the one drum, that screen cleaner called as a single drum rotary air screen cleaner. And if the unit consists of the two double drum, then that equipment or device is known as a double drum rotary air screen cleaner. The components of the single drum rotary air screen cleaner, we can see that in diagram. First one is feed hopper, second rotary screen, third one is a aspirator, fourth one is a discharge unit, fifth one is a oversized foreign matter, and sixth one a vibratory screen. The mixture is fed into the hopper and the sound grains pass through the screen perforation into the center of the screen drum, whereas the oversized material is retained above and pass out through an outlet. The sound grains come out at the center side of the screen drum, rotating the high speed and fall onto the vibratory screen, which remove the dirt particles. The light particles like straw, dust are sucked away by the aspirator and discharged through the aspirator outlet. The clean grains are delivered through the discharge chute. In this machine or the device, फीड ऑपर थ्रू मिक्सचर जो है, ग्रेन मिक्सचर, वो फीड किया जाता है। जब वो ड्रम और रोटरी स्क्रीन के सेंटर में आता है तो वहाँ पे ग्रेन जब पास होते हैं तो ओवरसाइज मटेरियल जो है वो अब वहीं से अदर आउटलेट से पास होते हैं और वो जो जब ग्रेन्स नीचे आ जाते हैं तो ग्रेन्स वहाँ पे जो एस्पायरेटर है वो एस्पायरेटर थ्रू लाइट पार्टिकल जो भी प्रेजेंट है उस ग्रेन में वो निकाले जाते हैं। लाइट पार्टिकल मीन्स स्ट्रॉ, डस्ट, दिस पार्टिकल्स आर रिमूव बाय द एस्पायरेटर एंड देन the all the grain material are discharged through an aspirator outlet. Then clean grains are delivered through the discharge route. Clean grains then pass through the vibratory screen and then it passes to the discharge unit और वो जो क्लीन ग्रेन है वो डिस्चार्ज के थ्रू बाहर निकाला जाता है। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल ड्रम रोटरी एयर स्क्रीन क्लीनर। दिस इज अ डबल ड्रम रोटरी एयर स्क्रीन क्लीनर. We can see that here is a two drum, first and second two drum. So this equipment is known as a double drum rotary air screen cleaner. The working principle of the single drum rotary air screen cleaner and double drum rotary air screen cleaner is the same. The difference is there is a one difference, that is the here is the one in single drum rotary air screen cleaner consists of the only one drum and the double drum rotary air screen cleaner consists of the two drums. In double drum rotary air screen cleaner,
It has a two rotated screens and which are moves or the rotates in opposite direction to the each other, and the working principle is the same. When the feeds or the mixture is fed into the hopper, then sound grains pass through the screen perforation at the center of the screen drum, where the oversized material is retained to the above and pass through an outlet. Then light particles, that is the straw dust, are sucked by the aspirator and the discharge through the aspirator outlet, and the clean grains are delivered through the discharge chute. This is the working of the double drum rotary air screen cleaner. Thank you.